Hi guys, so moving on to the next code. I have declared a 3D array, right? If this is your M, this is N, this is O. M denotes the number of 2D array, N denotes the number of 1D array, and O denotes the number of element. So it means this 3D array consists of two 2D array. So this is two 2D array, and each 2D array consists of how many element? Two 1D array. So this is your 2D, this is your 0th. This is your 0th 2D, and this is your first 2D, right? And each 2D consists of how many 1D? Two 1D. So this is 0th 1D, and this is your first 1D. Similarly, this is 0th 1D, this is first 1D, right? And let's suppose the base address starts from 100. Now declare two pointer P and Q. Your P is containing what? Address of ARR 111. It means what? First 2D का first 1D का first element का address. तो first 2D के first 1D का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, यानी फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया? ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है. ये 0th एलिमेंट है, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट. ये 0th एलिमेंट है इस 1D का, और ये फर्स्ट एलिमेंट. सो P इज कंटेनिंग व्हाट? एड्रेस ऑफ ARR 111, यानी फर्स्ट 2D के फर्स्ट 1D का फर्स्ट एलिमेंट, यानी 8 का एड्रेस. तो 8 का एड्रेस क्या होगा? बेसिकली 100, मान लो 4, 8, 12, 16, 20, 24. Let's suppose it is 28. So this P is basically pointing at the base address 128, and this Q is ARR plus 1. Now this is important. What is your ARR? What is your ARR? ARR is nothing but ARR is, again I told you that in case of 3D, your ARR is what? Base address of 2D array, 0th 2D array, and star ARR means base address of 0th 1D array, and star ARR means base address of 0th एलिमेंट, राइट? सो इसलिए मैं कहता हूँ बेटर है तो मेरे एरे 1D 2D 3D पे जाओ और उसको रिवाइज करो, राइट? सो Q is ARR, and ARR definition is the base address of your 0th 2D. It means I am talking about this base address of your 0th 2D, which consists of your 4 elements. When you say plus 1, so from here you will directly move to the base address of your first 2D, and the base address of first 2D starts from where? 100, 4, 8, 12. It starts from 116. So this Q is pointing at 116, right? So now what you are doing? You are printing star of P. P is pointing at 128. 128 star is 8, right? And Q is pointing at 116. 116 star is what? 5. So answer is 8 and 5, right? Important है. पर इससे पहले यार वो पीछे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. Now moving on to the next question. I have a string ABC 1 2 3 4 5 6. ABC 1 2 3 4 5 6. And your, let's suppose the base address starts from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So your str is pointing at 1 because you initialize this pointer with the string. So your str points to the base address of your string ABC 1 2 3 4 5 6. Now printing printf %c plus plus str comma star str plus plus comma star str plus plus. यार यहाँ पे एक ही लॉजिक है that inside printf the expressions are evaluated from right to left. तो पहले तुम इसको evaluate करोगे, फिर इसको evaluate करोगे, फिर इसको evaluate करोगे, and then they get printed from left to right. The expressions are evaluated from right to left, but they get printed from left to right. तो सबसे पहले तुमने evaluate किया, ये post है, ठीक है? पोस्ट का मतलब कि अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा मेरा एसटीआर, अभी मेरा एसटीआर वहीं पे है, ठीक है? तो अब इसका स्टार क्या हो गया? ए. तो इसका स्टार हो गया ए. पर ये जैसी इसके बाद जैसे मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा, तो जैसे ही मैं इस एसटीआर पे आऊंगा, बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट इंक्रीमेंट मेरा एसटीआर इंक्रीज हो गया. कहां पे आ गया? मेरा एसटीआर इंक्रीज हो गया आ गया 2 पे. अब यहाँ पे लगा हुआ है पोस्ट, तो अभी ये 2 पे ही रहेगा, ठीक है? तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा डी. अब इसके बाद जब मैं इस एसटीआर पे आऊंगा, बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट इंक्रीमेंट मेरा एसटीआर इंक्रीज हो गया. कहां पे आ गया? 3 पे आ गया. अब 3 का स्टार क्या है? सी, और उसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, तो क्या आ गया? नेक्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है? डी. एंड दे गेट्स प्रिंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? डी प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर ए प्रिंट होगा. तो आंसर इज डी, डी, ए, राइट?
So in printf the expressions are evaluated from right to left but they get printed from left to right. तो मैंने पहले ये str++ पोस्ट तो अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अभी 1 पे रहा, उसका स्टार ने चेक किया a, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ a। फिर जब जैसे मैं इस स्टेटमेंट पे आया बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट इंक्रीमेंट, जैसे मैं इस str पे आया मेरा पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर कहाँ पे आ गया, 2 के एड्रेस पे आ गया, इनफैक्ट 2 पे आ गया और 2 का स्टार क्या है b, तो अगला ये क्या प्रिंट हुआ b। फिर जैसे ही मैं इस str पे आया बिकॉज ऑफ str++ मेरा पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया। अब मैं यहाँ पे पॉइंटर में इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंटर का जो स्टार है जो उसकी वैल्यू है उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी c। ये c था और c को मैंने प्लस प्लस कर दिया तो इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आ गया d, राइट। सो आंसर इज d। राइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।